Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty Sir, Dr. Milendra Rao Sir, Dr. Narendra Gupta Sir, Dr. Mahesh Chandra Sir, our most senior and respected mentors, Dr. Manoj Jaiswal Sir, Dr. Dilip Jani Sir, Dr. M.B. Mahadik Sir, Dr. S. Aanand Sir, Dr. Shashikant Shinde Sir, और हमारे सभी respected IHF family members। तो आज का वीसी स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, 4 और 5 अक्टूबर पूना में हमारा पहला ऑफलाइन सेमिनार है, जो हम हमारे सभी रेस्पेक्टेड मेंटर्स और मेंबर्स के कोलैबोरेशन के साथ करने जा रहे हैं। और बहुत अच्छा नंबर है पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो आने वाले हैं। फिर भी अगर कुछ नए मेंबर्स अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, कुछ फ्यू सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। तो वहाँ पे हम सब एक दूसरे से मिलने वाले हैं और खूब स्टडी करने वाले हैं और मस्ती भी करने वाले हैं। शिंदे सर के मेहमान रहेंगे हम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वहाँ पर। तो जो भी मेंबर्स हैं थोड़ा डबल माइंडेड हैं कि जाएं या ना जाएं, अगर आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। तो बढ़ते हैं हमारी आज की वीसी की तरफ। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। 3 दिन के बाद तो हम सब आपके पास ही होंगे सर। यस यस, आइए आपको पूना का खातिरदारी करवाता हूँ। सब लोग आइए। अच्छा सर, कौन केस पढ़ेगा आज? Who will read the case? सर मैं रीड करूं? Yes yes. हाँ सर। My glory was yesterday's story. This is the case of AKI 3 on the CKD NSAID, that is induced and diabetes chronic disease of the 57-year-old male patient. Last year, I was called to visit ICU for this gentleman suffering from CKD, pneumonia plus pleural effusion. It was the 3rd time that he was admitted for the same ailment in 1 year in the hospital. And instead of talking of his complaint, he started talking about how he is suffering financially due to the hospital stay, how it is difficult to afford. He wants to join his service so that he can run his family. Based on this presentation, I selected following rubric: mind, anxiety, money, financial matters about mind, business talks of mind, delusion, he is poor. I prescribed Brianna 30 too early. In a couple of days, he got discharged. Case taken in the month of June 25. Doctor, tell me about your problem. January 25. Sorry, sir. The case was taken in the month of Jan 25. Doctor, tell me about your problem. Patient, I have big stress of property as it is undivided. It is causing me pressure. Here the hand gesture, opening the fist. We 2 brothers have jointly purchased some property, but he holding all the property and not letting me to use my share of property. Due to the hospitalization, I am in debt. Otherwise, I could have bear the expenses. Doctor, what do you feel about this? Patient, I think it would streamline financial condition of my family. I was a very big shot businessman in my earlier days. I had a lots of property, but due to some losses, I came on the road. After that, stress started mounting on me, but where should I express? How I have good harmony with my wife. Since last 25 years, my brother has not given me a single penny from the joint property. If I would have got it, I could have lived comfortably. I am a manager
at a restaurant which is run by a distant family. They are looking after my hospital bills. But how many times they will bear the expenses? This is hurting me inside. Again, there are hand gesture opening the feast. They they means the hotel owner treating me as a family member because I was taking care since last 30 years. They had given me house, car, plus help in other matters. How much time they will bear me, doctor? What kind of sensation develop inside your body? Patient. I had taken soda due to the bloating. Within 10 minutes, I need to rush to the hospital. I had a near death experience. It seems that he did not understand my question. Then, doctor, what do you feel about your brother's situation? Patient. He may wish to transfer the right, but his wife may be opposing. Again, there is a hand gesture gripping fist tightly. I am sure that whenever I get this stress, I get sick and need to be hospitalized. Wife also annoys me about asking for the property. It ends in the quarrels. Doctor, what happens to you? Patient, just trivial things like breathlessness, but they admit me directly into ICU. Nephrologist is very good person, but I have to pay hospital bills. Hospital charges 2 to 2.5 lakhs every time. I can't afford frequent admission. I don't want to live under someone's favor. I know that mere soda would not cause such element. Maybe something is occurring which I don't know. I experience heaviness in the chest, cough, difficulty in breathing. I can't walk 2 steps. I know that kidneys are not functioning well, so I am getting this trouble. They operated me for AV fistula. Doctor, how did kidney elements start? Patient. In COVID, when I was admitted in one rural hospital, they have given me some injection. Though I had a diabetes and blood pressure, it caused a side effect and the kidney got damaged. They did my dialysis, so I survived. Since then, I had this. My mother and father died in that period, so I had gone to perform the rituals to my native place, and I also got the infected with the COVID. Doctor, did you feel shock or anything? Patient, no. Father was aged, but I didn't meet mother nor seen her dead body. That injection caused this problem. I would have died in that period only. I underwent 4 dialysis. Doctor, what do you feel about brother's wife? Patient, I can't cross him, nor my wife. What do you feel about brother and your wife? Sorry. Patient, I can't cross him nor my wife. Same maybe with my brother. My condition is poor, but due to the grace of deeds, people are bearing my expenses. Without them, I would have not survived. I want you to treat my kidney and pneumonia problem. I don't want to put on dialysis. Doctor, tell me about your appetite, thirst, and sleep. Patient, everything is fine. Nephrologist advised me not to drink water more than 600 ml. Otherwise, I can drink 2 to 3 liters of water. Urine output is normal. Sleep is sound. Doctor, what dream do you get? Patient, not much. About my past. How was I and how am I today? Doctor, tell me about your past. Patient, good time. I used to earn 5,000 rupees daily in 1990. I had a 50 employees, big business of wood and threads. But one fine day, fire set up and I suffered loss of 15 lakhs. In that period, I used to drink alcohol in the morning, all bad habits, and I had adopted. Then he told some incidents of his prosperity and how people treated him after the reversal of his fortune.
I am having good piece of land, but in such situation, it doesn't help. It is of no use for me. Telling me how he has a land at various places and society respects you when you have money. Doctor, see this picture and tell me whatever comes to you. Patient, she and me are in the same condition. She has many problems. She is in the worst condition. Doctor, what are the incidents which can cause worse situation? Patient, in old times, people used to respect human beings and not the monetary side. Now only money speaks. I have closely observed this. When you have money, people are with you. In golden days, people were waiting for me since morning. Now they didn't pick up the call also. I resigned from the government service and offered it to my cousin. I had a strong political connection. Even I was jailed for 6 months. It was so close relationship. He told some incident of his political connection. End of the case. After analysis, I gave him remedy, but it did not act well. Then I changed the remedy. It is acting well. He is following his allopathic medicine. In the month of March, he again suffered the acute episode of pneumonia and the pleural effusion, but he responded well to the intercurrent remedy, which was given 4 days. No need for admission since 9 months. His serum creatinine shoots to 7, but no symptom. Gradually it settled. Now his serum creatinine ranges around 4 to 5, which was initially around 8. He is still on a homeopathic medicine. Thank you, sir. Thank you for reading, Vandana madam. So, Thank you. what is AKI? Acute kidney infection, sir. Acute kidney Acute kidney injury. So, what is the meaning of AKI grade 3? You can Google it. Hello, Yes, sir. Structural involvement is there. Okay. So the What kidney else? unit structural involvement with dysfunctioning. Okay. Anything more about grade Paren, 3? paren, Parenchymal involvement is there. Kidney parenchymal involvement is there. Very good. And Sudden rapid decline. yes. How much functions? How much percentage in a way kidney can function in grade 3? ये जो भी है आपको जो लगता है आप बोलिए ना. नहीं आप गूगल कीजिए, डोंट वरी. See, when we are treating such kind of pathology, it is always possible that we don't know the correct nature of pathology. We can have gross nature of pathology, we know it, but the correct percentage, correct amount of damage, we don't know. We can Google it. Now we have a facility. Why don't you use it? You can do Google right now. Within few hours, it can damage the kidney. Within few hours. It is Okay. so rapid decline. Okay, very good. What is the functional percentage of a kidney in AKI grade 3?
It is almost complete loss of the kidney function affecting the other organs system and can be fatal if not promptly treated with the appropriate intervention, like a Yes. dialysis. Okay, very good. So what must be the role of homeopathy in such cases? What we expect? What kind of a prognosis we expect from the patient? First, the urine output should improve, na? Like Okay. if the because their urine output is less than 3 ml, I suppose. 4 mg dl or less than लिखा हुआ है. Urine output is almost nil. Hmm. We should go for that. Okay. So what kind of a prognosis or what kind of expectations of a homeopath? So it is urgent hospital admission is required, and this is Okay. severe or life-threatening cause. Hmm. So Okay. if we to rush to Hospital. Yes. But can a patient be manageable on dialysis only, or should homeopathy has some role even after the discharge of the patient? yes, it Hello. should not recur. Hmm. It should not recur. So we should give Okay. homeopathy along with that, along with the allopathic medicine. Okay. Yes, Kiran sir. Sir, this pathology, uh, this is irreversible pathology. Yes. Patient should live on only dialysis, sir. And with the help of homeopathy, we will just increase the days of his life. Hmm. Correct. Days or years, it may be months, but we will increase its life expectancy. Yes. Very good. But we can't stop his dialysis. Okay. This Very life saving dialysis should be we should on to keep it on. very good. And if the patient has not done a dialysis since 9 months, This is miracle, sir. what do you all think about this? If in such a grievous condition, patient is not on dialysis since last 9 months after homeopathic treatment. Of course, there was one spike when creatinine reached almost to 8. He has pleural effusion and pneumonia again, and that was settled on intercurrent remedy. Sir, So this is means it patient is so? improved. Yes. So it's like what is written in Davidson or Harrison. Sometimes we can cross that limit due to our motherpathy, that is homeopathy. So homeopathy can do miracles, what we say, but it is of course a science, and in the name of miracle, we are overlooking the scientific application of the homeopathy. So the nephrologist, once he was taking follow-up after every 10 days, then 15 days, then after 1 month. Now he's taking follow-up after 2 months. And my patient can see the astonishment in the eyes of nephrologist. Of course, they are not told the nephrologist they are taking homeopathy, but somehow he is also puzzled how this is happening. So this is the glory of homeopathy, the patient which has lost his glory in the past. So coming to the case, how should we approach this case? And this case has been solved with the method of PM. I know many of you are not
aware of this system, but we can discuss this. So what is the issue of patient? First, we will select kingdom. What kind of a kingdom do you think the patient belongs to? Some metal. Okay. Mineral kingdom. Okay. Plant So kingdom. can anyone read the inputs I had given in the group about the all three kingdoms? So that it will be easy for the other people who will watch the आवाज नहीं आ video रही chat है। afterwards. आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। Can anyone read the inputs I had given about the kingdoms in the group? I will. Yes. Let's go. What is the reason patient is suffering? First, he is saying, I am lacking something in me. He losing something, wants preserve something? Is he talking about structure, incompleteness or excessive? This is mineral kingdom. Second, is he saying situation, environment is affecting me? Is he sensitive to behavior of others? Is he seeing life in single line? Is anyone is responsible for his problem, or is he responsible for his elements? This is plant kingdom. Third, is he saying a particular person or group is behind his element? Do we see animality, victim or aggressor play? Does he fighting for his survival? Is it a life or death situation? Superior versus inferior. This is animal kingdom. Choose your kingdom. Okay, thank you, madam. So according to all of you, what must be the kingdom of a patient? ये पेशेंट को क्या उसके जो ब्रदर है उसने इसका जो प्रॉपर्टी लिया था उसमें से उसका शेयर नहीं दिया है। वो 25 साल से उसने वो नहीं किया है, तो उसके लिए उसकी वाइफ भी उसके साथ आर्ग्यू करती है और उसकी वजह से उसको स्ट्रेस बढ़ता है और उसके बाद उसको कंप्लेंट्स आते हैं। और इसका सर्वाइवल ऐसे मुझे ज्यादा सेंसिटिव ऐसा लगा, क्योंकि वो उनके वजह से वो सफर कोई तो इसके कंप्लेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो ब्रदर की वजह से, ब्रदर ठीक है लेकिन उसकी वाइफ की वजह से वो ब्रदर नहीं दे रहा इसको शेयर, तो मुझे प्लांट किंगडम लगा सर। Okay, everybody will speak. नहीं वो तो 25 साल से प्रॉपर्टी नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो उसको अभी चालू हुए ना। उसका प्रॉब्लम चालू हुए लॉस इन द बिजनेस, ह्यूज लॉस इन द बिजनेस। पैथोलॉजी बाद में आई है ना सर। हाँ, लेकिन बिजनेस उसका बंद हो गया, that is around 30 years ago. It is अच्छा not recent thing. ओके In 1990s he was earning that. ओके। सब लोग बोलिए, अगर कोई डिफिकल्टी तो पूछिए। हेलो सर, ये प्लांट किंगडम ही लगा क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत है। ये कहीं भी एनिमल जैसा एग्रेशन नहीं दिखा या मिनरल जैसा ऐसे स्ट्रक्चरल पैटर्न नहीं दिखा। इसमें ना इसके भाई ने इतना किया लेकिन उसके बारे में इसने कभी निगेटिव नहीं बोला। अभी ये इसकी सेंसिटिविटी की वजह से इसने नहीं बोला होगा। सो सर ये प्लांट ही लगा। अदर वन? और इसमें इंसिक्योरिटी बहुत लगी। पार्डन मैडम? सर ये प्लांट की सेंसिटिविटी और इनसिक्योरिटी ज्यादा लगी। यस, ओके, वेरी गुड। और
फिर मुझे भी ये प्लांट किंगडम ही लगा बहुत ही। उसका सब प्रॉब्लम उसके भाई के, वो बोल रहा है कि सब अच्छा था कि मुझे है ना वो सामने वाले जो होटल के उसके जो ओनर है उनसे पैसे लेने में उसको हिचकिचाहट है, क्योंकि वो कर तो रहे मगर मैं कितना उनका फायदा ले लूं। और दूसरा जो मेरा हक का है वो मुझे मिल नहीं रहा, ऐसा बोल रहा था वो। तो जो है मेरा वो तो मुझे मिल जाता तो मैं मेरे जो अर्निंग है वो मैं मेरा सफिशिएंट हो जाऊंगा मैं। तो मुझे भी ये थोड़ा प्लांट के जैसा ही लगा। उसने कभी भी किसी के बारे में भी गलत नहीं कहा, मी वर्सेस यू का कुछ भी इशू नहीं लगा। वेरी गुड। तो प्लांट ही लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाकी लोग बोलिए, आप सब लोग चाहते हो कि ऐसे पेशेंट्स आप भी ट्रीट कर सको? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? यस सर। तो बोलिए फिर। अगर आप अभी नहीं बोलोगे तो कब सीखोगे? एंड इट इज नॉट आई एम अ टीचर, आई एम वन ऑफ मेंबर ऑफ यू। बस मैं थोड़ा सा ये सिस्टम जानता हूँ इसलिए। तो आप लोग भी बोलिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। केस तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। इट इज फैंटेस्टिक एंड ऑल ऑफ वी आर गोइंग टू सॉल्व द केस टुगेदर। सो डू पार्टिसिपेट। सर ये प्लांट में स्पेशली सर फंगल। ओके। हेलो। यस। हाँ सर, ये प्लांट में स्पेशली फंगल लगा क्योंकि फंगस ये इतने बड़े नहीं होते। सो स्मॉल क्वांटिटी में ग्रो होता है, उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। इसके लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम आया तो ये फेस कैसे कर रहा है कि करेजियसली या फाइटिंग मोड में नहीं है। और ऐसा लगा कि वो वन स्टेप बैक रह के ही ये सब कर रहा है। ये अपने भाई को नहीं बोल रहा है, वाइफ को नहीं बोल रहा है, और भाभी को भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। सर तो ये इसका फंगस का कैरेक्टर ये थ्रू एंड थ्रू दिखा रहा है। मतलब जो इनसिक्योरिटी है, स्प्रेड तो होना है बहुत फास्ट, लेकिन इतना दम नहीं है। थैंक यू सर। फंगस का मेन आइडिया क्या रहता है? हाउ फंगस ग्रोज? सर मुझे ऐसा लगा कि फंगस में इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता, इसीलिए वो मतलब इतना बड़ा नहीं होता। क्यों क्यों फाइट बैक भी नहीं कर सकता। ओके। लाइक कैन मॉस फंगस ग्रोज इट लाइको ऑन जैसा। इट्स ओन? कैन फंगस ग्रो ऑन इट्स ओन? सर सब हाँ बोलिए ना। वो दूसरे पर ही डिपेंड रहेगा, वो खुद को दूसरे से उसको नरिशमेंट चाहिए रहती है। फंगस दूसरे के यस सिवा नहीं बढ़ सकता ना। यस। तो व्हाट ही विल से कि मुझे मेरा तो मिला ही है, लेकिन मेरे भाई का भी मुझे चाहिए, अदरवाइज आई कैन हाउ कैन आई ग्रो? जो मेरा है वो मेरा है, तेरा है वो भी मेरा है। दैट इज द एटीट्यूड। हेलो। सर। जी सर, आपकी आवाज और चली गई थी। हाँ, रेंज गई थी अभी। सो फंगस न्यूट्रिएंट्स अगर खींचता है तो बदले में क्या देता है? जी बताइए प्लीज। फंगस पड़ने के बाद यूजुअल कुछ देता नहीं, रेदर हार्म करता है। सो ऑलमोस्ट मेजर जंक ऑफ अ फंगस जस्ट
takes the nutrition and it grows. And there are only 5% of fungus approximately who form a symbiotic relationships with the host. के बदले में उसको कुछ देंगे वो. So do we have that kind of a theme in this case? कि मैं खींचना चाहता हूं या मुझसे सब कुछ खींच ले रहे. Do we find a theme of a fungus or a host? And means do we find the theme of a parasite or host? No sir, no. नो सर नो. नो इन So स्पाइट what ये तो host will इंडिपेंडेंट रहना speak चाह रहा है. कि यार भाई मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, उसकी बेटी की शादी की, इसके उसको बेटे को मैंने घर दिया, कार दिया, सब कुछ दे दिया और भी दे रहा हूं. और कब तक लेगा मुझसे? कभी तो अपने पैरों पे खड़े हो जा. नहीं तो फिर दूसरा बोलेगा मैंने भाई ने मुझे बंगला दिया, गाड़ी दी, लेकिन होटल ओनर जो है ना उसने मेरा इंश्योरेंस नहीं करवाया. अगर उसने मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया रहता तो आज ये आपत्ति भी मुझे फाइनेंस का लॉस नहीं होता था. मैंने 30 साल उनके लिए सर्विस की, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरा इंश्योरेंस नहीं किया. इज इट दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी हियर इन द केस? नो सर. So does it belong to the fungus kingdom? नो. Fungus is a very separate kingdom, like plant, mineral, animal. What the patient is talking through and through in this case? उसको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए. सर जस्ट अ मिनट, फंगस का उल्टा वो क्या थीम बोल रहा. नहीं समझा मुझे. थोड़ा पेशेंट था मेरे सामने, मैं सुन नहीं पाया ठीक से. फंगस का थीम ये है सर कि मैं न्यूट्रिशन खींचूंगा और सिर्फ खींचूंगा, बदले में कुछ नहीं दूंगा. So there are two versions. Either host will speak in a language कि मैं इसको दे रहा हूँ, मैंने भाई के लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, बंगला दिया, गाड़ी दी, शादी करवा दी बेटों की, बच्चों के एजुकेशन किया, लेकिन फिर भी अभी भी वो मुझसे मांगता है. और कितना दूं मैं, उसने मेरा पूरा खून चूस लिया, उसने मेरी पूरी वाइटलिटी लाइफ चूस ली, और फिर भी आज मुझसे वो मांगता है कि वो बोलता है लोगों को मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया. That kind of a theme of a host or parasitic theme will be like this कि मैंने 30 साल होटल में मैनेजर का काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग ने मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं किया. अगर इन लोगों ने मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस अगर किया रहता तो ये एक्सपेंसेस सब वो इंश्योरेंस निकल जाते थे. They have done nothing for me. I have given my blood and sweat to them, but still these people are ओवरलुकिंग में. सिर्फ होटल का यानी हॉस्पिटल का खर्चा करवाते, निकल जाते. अरे हॉस्पिटल का बिल 2.5 लाख रुपए है, आप सिर्फ अगर 1.5 लाख रुपए लेंगे तो कैसे चलेगा? मेडिसिन के लिए पैसा लगता. तो दैट काइंड ऑफ रिग्रेट, दैट काइंड ऑफ एंगर वी विल सी इन अ फंगस. यहाँ तो नहीं दिख रहा है, या तो ये उनका उपकार होता है और ये नहीं चाहिए ऐसा लगता है इसको लगता है कि मेरा खुद का होना चाहिए, मैं डिपेंडिंग हूँ उनके ऊपर, ये खा रही है बात इसको, ये बीमारी की जड़ यहीं से आ रही है उसकी. Yes. So there is not a fungus kingdom. So what patient is talking through and through? What is the main subject you find? उसका ही जो है उसी को नहीं मिल रहा है. ओके, मिलता तो क्या होता? सेल्फ सफिशिएंट हो वो जाता, बोल फिर रहा उसको है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कि होना पड़ता. बोलिए बोलिए. वो बोल रहा है कि आप मुझे ऐसा कुछ करो कि मेरा ये जो एक्सपेंसेस है वो भी कम हो जाए, ऐसे मेडिसिन दे दो ताकि मुझे उनसे लेना ना पड़े, तो मैं अपने अपने इसके ऊपर मेरा जो है वो चलेगा लाइफ. It means he wants to stand on his own feet. बराबर? Sir. Yes, हाँ sir. सर. यस. And second thing what he wants कि अगर पैसा रहेगा तो जिंदगी आराम से सुकून से कटती है.
Now he has decided, means उसके मन ने ये बात ठान ली कि he cannot be that big shot what he was earlier. लेकिन whatever self sufficient और daily needs जो है वो भी अगर पूरी होती है तब भी मैं सुखी हूं, ऐसा है. what is talking about money. पैसा Do है you तो ही feel? लोग पूछते हैं. हाँ, मनी है तो हनी है. So where we should fit in this, कहाँ पे बैठता है, कौन से कॉलम में बैठता है ये. पीएम वाले जो सीख रहे थोड़ा जवाब दो. Which column it fits? फोर्थ. So कौन सा आता है कॉलम फोर्थ में. मैंने चार्ट्स भेजे है ग्रुप में. You can also refer to the chart. Which column? What is the name of the column? अगर प्लांट है तो डेलिनिडी फैमिली होती है, दैट इज अर्थ वाटर एलिमेंट प्रीडोमिनेंट जहाँ पे. और ओल्ड एज है तो कैपरल्स और सेलिकेलिस फैमिली रहेगी. ओल्ड एज इसके लिए क्योंकि ड्रीम्स इज टॉक ऑफ द पास्ट. ओके. सो ओल्ड एज के ऊपर कौन सी फैमिली है. और एक ये मैच्योर एडल्ट में एरिकल्स भी है ना सर, एंड क्यूक्रेबिटिल्स भी है. और कैपेरल्स है. कैपरल्स पहले बोला. हाँ, क्यूक्रेबिटल्स में कौन से रेमेडीज आती है हमारी. सर क्यूक्रेबिटल्स में बाजा, ब्रायनिया और सिफेंड्रा इंडिका, कोलोसिन, कुकुरबिटा, एलिट्रिनियम ऑफिसिनम, लूफा, ओपरक्यूलेटा, हाँ, मोमोरिडिका चाटिना और टेमरिक्स. Okay. So we had already given the Bryonia. Yes, but sir. Bryonia stopped acting. Now what to do? This is before the case taking. So what we must rectify? सर मुझे किंगडम एनिमल लगा था. Okay, no problem. But this is plant kingdom. हाँ सर. So what should we do? सर उसका जो हैंड जेस्चर है और उसका जो कॉलम है उसको रिकंसिडर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसका ईगो तो बहुत डेवलप्ड है. तो वी कैन थिंक ही कैन बी इन कॉलम 6 आल्सो, क्योंकि वो बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जीज में स्ट्रांग है. Correct. Is it talking about I and the group? नहीं. हाँ लेकिन हाँ लेकिन उधर जो था ना, जब भी उसका अक्यूट एपिसोड आ रहा था, सडन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, उसकी वजह से मुझे एनिमल किंगडम लगा था. कि उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता था बार बार, और उसके लिए अभी उसके लिए लग रहा था. और वो जो हैंड जेस्चर था उसका, मुट्ठी खुलती बंद होती, खुलती बंद होती, वो एक मुझे उसका लग रहा था कि उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है. मतलब उसके लिए उसकी लड़ाई चल रही है. तो बेसिक फाइटिंग फॉर सर्वाइवल कब होता है?
व्हाट आर द इश्यूज फॉर सर्वाइवल? सर्वाइवल किसके लिए चाहिए? कौन सी चीजों पे सर्वाइवल डिपेंड है? बेसिक रोजी रोटी, मतलब रोटी कपड़ा मकान। फाइनेंस पर सर, फाइनेंस से जाती है। तो बेसिकली रोटी कपड़े मकान, बराबर। रोटी कपड़ा मकान कहाँ पे आता है? कौन से कॉलम में आता है वंदना मैडम? कॉलम 4 सर, कॉलम 4। So how can it be column 6? नो, कॉलम 4। Now what to लेकिन do? लेकिन सर जब वो बोल रहा था कि मेरे काफी पॉलिटिशियन से कांटेक्ट है, मैं बड़ा बिजनेसमैन था, तो तभी तो उसकी बातें तो आयन ग्रुप के जैसे लग रही थी ना, कि ही इज टॉकिंग अबाउट मेनी पीपल। Okay. Can it not be inflated ego? विच ईगो? Inflated ego. अच्छा, इन्फ्लेटेड ईगो। ओके। उसने बताया कि वो उसका जेल भी गया था, उसके कॉन्टेक्ट थे, तो वो ऐसे बात कर रहा था, तो वो ग्रुप की बातें कर रहा था ना, बहुत ग्रुप की पीपल की नहीं, जो। वो अपने ईगो की बात कर रहा था। मुझे बहुत बड़े लोग पहचानते हैं, मेरे पास अंबानी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो ये अच्छा, इन्फ्लेटेड ईगो है ना। तो ओके। कहाँ पे बैठाने का लेकिन वो वंस अपॉन अ टाइम वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, तो था उस ना? लेवल तक पहुंच उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो उसमें तभी फायर होगी, तभी वो पहुंचा होगा। जो उसने वहां जहां तक वो पहुंचा, तो मुझे लगा कि वो फायर एलिमेंट ही होगा, लेकिन अभी उस स्टेज का फेल्यूर आ गया है। बट तो does he find world is insecure? नहीं ना, क्योंकि उसका किडनी वालों का खर्चा ही ज्यादा होता है, 2-2.5 लाख हर बार हॉस्पिटल जाएं, तो उतना खर्चा ही मे नॉट कैन अफोर्ड। बट ऐसा नहीं है कि उसको खाना पीना नहीं है उसके पास। अगर हर बार 2.5 लाख जाएंगे तो इसका इशू आ जाएगा खाने पीने का, लेकिन अदरवाइज उतने पैसे होंगे शायद उसके पास कि वो सर्वाइवल का इशू नहीं है। लेकिन हर बार अगर 2.5 लाख जाएंगे हॉस्पिटल में, तो वो सर्वाइवल के स्टेज पे आ जाएगा, ऐसा मुझे लगा। इसके लिए मुझे भी लगा कि ये फायर वाला होगा। ओके। फायर हम्म। वालों में क्या रहता है? यू वांट टू डू समथिंग हाँ, वो तो चाहता है ना कि which is अगर मुझे ये खर्चा ना हो हर बार 2.5 लाख का, तो मैं खुद के पैरों पे आके अपनी फैमिली को बचा लूं, कि वो लोग मेरे लिए क्यों खर्चा करें, मैं क्यों लूं ऑब्लिगेशन, उनका ऑब्लिगेशन लूं, वो भी क्यों करूं मैं। तो मतलब उसका वो भी है ना, ईगो भी है ना, क्यों लोग मेरे लिए पे करें हॉस्पिटल का बिल। सो ये ईगो कहाँ पे बिठाने का, मैं वही बोल रहा हूँ। सर ओल्ड एज का होना चाहिए, ओल्ड एज को हमको नहीं छोड़ना चाहिए था। इन्फ्लेटेड ईगो, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, कहाँ पे आता है ये? कॉलम 4, प्लांट किंगडम, इन्फ्लेटेड ईगो, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, इन्फ्लेटेड ईगो, बोस्टिंग, बोस्ट्रस, हाँ सर। कहाँ पे बिठाना है इसको? Why Brian act then? Why stop acting afterwards? There should be logical reasoning, na? It does not belong to the dicotyledon. It belongs to विराट्रम है monocotyledon. मोनोकोट। सर, विराट्रम देना है। मोनोकॉट्स में कॉलम 4 में क्या क्या आता है? चार्ट भेजा है मैंने, हाँ पढ़िए। सर, सेपरेशन कोमोलिट्स, उसमें कोमोलिट्स में ग्रेमिनेल्स, जिंजर बेरेलिस, ऑर्चिडिल्स एंड जुनेलिस, ये चारों फैमिली आती हैं। ओके, वेरी गुड। सो विच इज द, अभी जो पेशेंट की जो पैथोलॉजी है और जो एज है, व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट? Is he thinking about the past? Is he thinking about the present? Is he thinking about the future? If he's thinking about the past, it belongs to the old age. If he's thinking about the present, he belongs to the child age. If he's thinking about the future, then it is young age, young stage. What he's talking about?
Now, Future, present. past, present. Present. Yes. He's talking about the past. My glory was like that. आज मैं ऐसे हूँ, लेकिन मैं वैसे हूँ एक्चुअली. मैं डेली 5,000 रुपए कमाता था. मैं जेल में गया था. मेरे पास 50 लोग काम करते थे. सवेरे से लोग मेरा इंतजार करते थे. और आज की डेट में वो है नहीं उसके पास, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में दैट इज रूलिंग. एक दफा राजा हरिश्चंद्र को भी चांडल का काम करना पड़ता है, लेकिन वो नहीं भूल सकते कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूं. सो व्हाट मस्ट बी द एज, व्हाट मस्ट बी द रो? Old age. बाकी लोग भी बोलिए. चार्ट भेजा है मैंने फॉर रेफरेंस. व्हाट इज द लास्ट फैमिली इन द सेपरेशन फ्रॉम मदर कॉम्युलेट्स में? ऑर्चिडल्स एंड जुनेलिस दो हैं. ऑर्चिडल्स कॉलम 4 की रो 6, 7, 8 दोनों आती हैं. और जुनेल्स? जुनेल्स में लास्ट. तो व्हाट इज द मेडिसिन फ्रॉम द जुनेल्स? Sir, I can't find the remedies in Juneels. ओके. मेडिसिन का नाम सर अंदर नहीं है भाई, बोलो ना. द नेम ऑफ द रेमेडी जुंकस इफिसस. JUNCUS. Sir, one Juniperus is there. No, it's a Juncus. Juniperus is different medicine. Juniperus communis. That is different. Dr. Farooq Master uses it very fantastically in CKD patients. Right now, he has shared 2 days before one video. Does anybody have a laptop? Any software with him? हाँ सर. जी सर. बोर्ड में से पढ़िए. जुंकसी. मैं पढ़ू? पूरा नाम क्या है प्लीज बताइए. Juncus Effusus. JUNCUS. Sir, padu. हाँ Juncus पढ़िए. effusus from Boric, a diuretic, urinary affection, dysuria, strangury, and ischurria. Asthmatic symptoms in hemorrhoidal subjects. Bubbling sensation, abdominal flatulence, arthritis, and lithiasis. Correct.
सर मैं यान शाल्टन की बुक में से पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। जुंकस एफिसस series hydrogen, carbon, and silicon. Emphasis on the silicon series. Clades, that is Sapraceae, Comoledion, Lilady. Phase 4, subphase 1, stage 6. Mind, lost the friends and connection. Better by thinking he could do it all alone. Dreamed, sad, vexatious, haunting. Abdomen covered with warts and ulcer, to which he is indifferent. General sensation bubbling. Body, lungs asthma, abdomen flatulence, rectum hemorrhoids, urine scanty, stone, urination painful, dribbling, dysuria, limbs arthritis. उन्होंने एक केस दिया है एक उसके बाद वो पढ़ूं Man 40 years, sleepless, complain of sleeplessness. He wakes at 4 a.m. and cannot get back to sleep. He has a recurrent chronic coryza with a headache, pain in his whole body, as if it is bubbles and it is stiff and tense. The complaints are worse from cold, fasting, stress, eliminating of the people, and better with the eating, being in the bed. He has sudden contracting pain in his left chest, as if the nipple is retracted, better from rubbing. He has a hay fever symptom with the burning eyes, attacks of sneezing, dry cough. The complaint started after his father died. He had a good contact with his father and misses him very much. He is closed, talk easily, but without saying much. He is optimistic, cheerful, modest, playing down his achievements. He likes the company, chatting. He works long hours and is a bit an outsider in the family. Sex life with his wife is on very low level. Dreams. His wife and children are gone. Analysis क्या दिया है सर ने? It is a carbon series. Complaints after his father's death. Silicon series. Outsider in the family. Complaints after his father died. Wife and children are gone. Phase 1, that is the outsider in family. Closed. Wife and children are gone. Stage 6, that is a closed one. After Juncus Effusus, MK, he gets the aggravation for 1 day or 2 days. After taking the remedy, then he starts sleeping better. His tension is gone, pain in his chest gone, and he feels much better and calmer. Thank you, sir. Thank you. The first remedy I was given was Salix Pregalis, but it didn't work. Then thought I must change the family, and then I came to this Juncus. I didn't know anything about the remedy. I'm reading this Juncus from the Michelle Ackerman's ma'am's book. Grass-like plants, though closely related to the gingiberales, nowadays they are assigned by APG to the poils. Poils means where we have bambusa, Salix fragilis, or Saccharum lactis, everything. The poils, what we call. The body fluids are affected. Diuretic affinity. Pain during urination with a crawling sensation in the urethra as if something alive is there. Bladder inflammations and edema. Kidney stones, probably gout. Breathing difficulties and asthma with sensation of pressure and heaviness in the chest, concomitant with hemorrhoids. Headache with bubbling sensation everywhere as if the head was about to split into two. Pulling sensation in the neck as if head was pulled to the right. Everything is bubble-like, laughing, jesting,
but wakes up in the morning in panic, jerking in the muscles with pain and tension, rheumatic pains, especially around the knee, rubbing and massage amelioration, digestion and nutrition, abdominal flatulence and rumbling, bubble-like sensation, flatness and rumbling, colic, abdominal pain, diarrhea would appear as if colic in, dreams of hunting and providing for the family. Very psychotic remedy, sensation as if old scars will reopen, keloids, dreams of abdomen being covered with warts, sensation of crawling in urethra, itching of the genital area of penis and the scrotum, rubbing amelioration. Sexual drive is strong, amorous dreams, but they can often romantic and sad. Sensitive people who avoid responsibility, trying to stay young for as long as possible, laughing during sleep, bubbly the seventh and sixth row, but anxious in the morning when one awakens to responsibilities of daily life, owing to the fallen quality. So, the main sentence is sensitive people who avoid responsibility, trying to stay young for as long as possible. Mahadik sir. आहेत का महाडिक सर? ऐकायला लागलोय, सगळं वर्ण जाते माझ्या. अहो वर्ण नाही, पण ते यंग आहे त्यांना कायमस्वरूपी. So you have told the correct sensation of the family. बरोबर, तुम्ही टोमणा तेवढा मारा मला. टोमणा तरी टोमणे सवा नाहीये. But it is what you told me, na, you want to remain young forever. So that is how the Juncus is. They want to remain young forever. अच्छा. Okay, sir. Continue. Yes, sir. So this was the remedy. So here the PM, column, row, sign, symptoms, everything comes together. So this is called as synergy, or a five-finger method, or anything you call. So system must be all inclusive. It includes all. This particular remedy has very few rubrics in the repertory, so many times we can miss the prescribing the remedy. But due to PM, I am able to prescribe. Otherwise, I didn't know the spelling of the remedy also, and I had first time read it while prescribing the remedy. So, any questions? You please ask. The intercurrent remedy was repetition कैसे था? Potency there, it was available only in 200. So 200 given for first week, daily thrice, then twice, then once. Now alternate days, now only twice a week. I didn't get LM potency, so I have to manage it on the 200 potency only. The intercurrent remedy given was arsenic album for 4 days in LM 0/3. Every 15 minutes, then 1 hour, then 2 hourly, then 3 hourly. And he came out of that acute attack of pleural effusion and pneumonia. So in such chronic cases, you may require intercurrent remedies, anti-miasmatic remedies. Always keep it in mind. Even though your constant prescription may be right, may be acting, but sometimes some block comes. So for such blocks, you require intercurrent remedies. So it is very important when you treating chronic pathological cases, be open to everything. Don't get close to any system, nothing. You have to open, because patient is important than homeopathy, and homeopathy is important than the system. So don't stick always to the system कि नहीं ये plant है तो I will not give prescribe mineral remedy. जब तक काम था, arsenic ने काम किया, then again I shifted him to the Juncus. So this is how I work. The Juncus grows in water or marshy districts where water is very abundant. So it holds the water. That is how the patient is holding water. I have not shared the picture of edema. After the VC, I will share the picture of edema. And after the prescription, his edema gone. Now he is as fine as normal person. Just he requires some injections of erythropoietin. They are given by nephrologist. I think he is taking 5 or 10,000 units of it.
and some regular tablets of blood pressure and diabetes. My aim was to just prevent his admission and pneumonia, first of all. And second, by God's grace, they didn't put him on dialysis. Now, there are no parameters for dialysis. Otherwise, they are talking about dialysis. You find a donor. He's suffering from also autoimmune, what we call as retroviral disease. So you can see the glimpse of his whole life in Juncus. They want to remain young. They want to be romantic. So this is how, if you prescribe remedy on a greater picture, it can act in grievous pathologies also. And as it is not like allopathy, if you have this disease, we will prescribe this set of medicines. But with the system, we can take out the limitations of our knowledge, because no homeopath can have 100% knowledge of materia medica, repertory, rubrics. So these are the tools which help us, or this is like a Google map, which makes your journey easy, which helps you arriving at a correct destination. That is how I use this system. If any questions, please ask. Again, how you have arrived up to that family? Sir, can you repeat it? Sir. Hello? Sir. Yes, sir. मैं वही बोलना चाहता हूँ, आप कैसे वही फैमिली तक और वही दवा तक पहुंचे, वही बात दोबारा बताने के लिए. सर, फर्स्ट टाइम जब मैं आईसीयू में गया तो व्हाट ही हैड टॉक, आई हैड रिटन इट. जब केस हुआ, then I really come to know this is the plant family, this is the monocots, and it belongs to the column 4. So 3 things are very sure. And when I was reading the themes, the first time I had given him Salix fragilis for 8 days, but it didn't work. Then I thought if I have taken correct case, if I grasp the correct theme, sensation, column, row, then as Ian Sholton sir said, you should not change anything. You just look up and down of that row, of that family, of that order. And when I was reading monocots page by page, then I come to this remedy, Juncus Effusus, and then I prescribe Juncus Effusus. This is how I arrived. So first I select kingdom, then sub-kingdom, then row. Of course, the sub-kingdom is nothing but the column of the patient, which is I have shared in the group. These columns are the evolutionary issues of the patient. So what the patient wants from the world, external world, he wants money. So it is just money. It is not the money for fighting, money to create a war, money to have a power, money to make himself big, to rule, to become a king. It is not that kind of money. It is just money for security. This comes in column 4. This is how I arrived. सर शॉर्टली सर, मोनोकोट को कैसे हम पहचानेंगे? Monocots have inflated ego. They are narcissistic personalities. They just talk about me. मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे था सर, मैंने वो किया, मैंने वो किया. They will not talk about their mother, father, brother, friend, as if they have grown on their own. Society, teacher, parents have not done anything for them. It is that inflated ego. Inflected ego or narcissistic personality. Yes. Like Veratrum album, like Lilium tea, like Paris quadrifolia, like Sabadil, like Ilium cepa, like Orchidales. They will keep talking. We know the rubric, Diligent King he is, Veratrum album. And they start suffering when they fall down from that position. Like Veratrum album,
When he falls down from that social position, he gets panic attacks. So it is the linking family between gingiberals and liliaceae. And many times it is just not the separate family, otherwise this has been included in the liliales only. It is very closely related to the liliales. Any more questions? सर नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जरा बता दीजिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी यानी ये रहते कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे स्ट्रगल किया, मैंने इतना कमाया। हम लोग उब जाते थोड़ी देर के बाद, यार यू आर नॉट द अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी हु शुड टेल अस हाउ यू अर्न मनी। या आई एम दैट मच हैंडसम, मैं इतना ये था, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन माय क्लास। और सर आते थे, सर के एक एक सवाल मेरे दो जवाब, एक एक सवाल मेरे दो जवाब। वो दैट काइंड ऑफ अंदाज अपना अपना में है ना। आमिर खान, हैव यू सीन आमिर खान अंदाज अपना अपना? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। नो सर, नहीं देखा वो पिक्चर। देख लेना, उसमें जो आमिर खान है ना, दैट इज मोनोकॉट्स। मैंने देखा है अंदाज अपना अपना तो देखा है। देख लो, बहुत बढ़िया है। हाँ, एक दो दोस्त एक पहले में चाय पियेंगे, इससे बिल कम आता है। बराबर। तो होटल में जाते हैं रवीना टंडन को लेके कि मैं तो जानता हूँ, मेरे लोग बोलते थे कि तू यहाँ के लिए पैदा नहीं हुआ है। हाँ, मुझे तो आपके बाप का बिजनेस लंदन में जाके संभालना पड़ेगा। आई नो इट। तो वो जो हैंड जेस्चर है, वो जो एटीट्यूड है, मोर देन वर्ड्स यू कैन सी दैट मूवी अंदाज अपना अपना, दैट इज मोनोकॉट्स। And if you want to see the dicots, you can also Salman Khan. He's dicots. वो आमिर खान पेरिस क्वाड्रिपोल वो ज्यादा लगता है, लेकिन वो हाँ हो सकता है अपने ही बारे में ज्यादा, हाँ, क्योंकि वही फैमिली है ना पेरिस। यस यस। और हेमा मालिनी फ्रॉम शोले, हेमा मालिनी फ्रॉम शोले। यस। और ये इफ यू सी द वो एक शॉट है ना जहाँ पे उसके ख्वाब में जूही चावला आती है, यार गोविंदा का शॉट है वो शुरुआत में। हाँ वहां पे भी देखो यार गोविंदा के साथ तुम कैसे काम कर सकती हो? तो ही इज नो वन, ही इज नॉट इवन। यस यस। लेकिन फिर भी वो एटीट्यूड उसका ऐसे कि ही इज लाइक द ओनर ऑफ जूही चावला एंड टॉकिंग विद गोविंदा। सो दिस इज दे वर्क। हमको हंसी आती है इनका देख के। हाउ कैन यू डू दिस थिंग? ऐसा है। मोर क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट? कुछ समझा नहीं तो पूछिए। सर यहाँ पे हैंड जेस्चर का significant hand gesture generally comes when there is a energy, when the patient is talking about the sensation. So it is very important what he is talking, and the way he is talking about the opening and closing the face, it is the kind of a sensation. But really I don't know the sensation of Juncus E, but from that I got hint that he had told it hurts me. So it is the plant kingdom I take out from that particular hand gesture. I didn't ask much about the hand gesture because I am very sure it is not of a telling me the particular family, but I taken the hint for the kingdom. 5A. Because we have almost about 415 families and we have got the sensation of only 34 families.
even not 10%. So it is not been possible that every time it may come in future, or rather we have to do the proving also. When we will come to know that there is a lot of pressure to perform, there is a way to vent out, I must throw it. That kind of a sensation may come. But on just one case, we cannot say anything. So I didn't go for the sensation. And sometimes why I'm telling PM, because it takes out the limitation of sensation, it takes out the limitation of repertorization, and we all include it. Because if we have such small remedy, what we can expect from the repertoire is that we are able to prescribe that remedy. Many times this happens now. Once सर our one. Yes, sir. इंटरन आर्सेनिक भी आपने वो रो 4 के हिसाब से ही पकड़ा ना, जो काफी लोग को लगा था वो. I had done the repertorization the way he has presented me. I cannot show that video, but I think general and it is matching with it is coming the correct analog of a mineral kingdom of Juncus. Even Brian is what we can say the real brother of Juncus. It is the mineral analog of Juncus arsenic album. सर जो पंपस जैसा लगा था ना, जैसे गौतम मुझे भी उसका लगा था तो हो सकता है शायद ऐसे बात करता है तो एक बार स्टोरी में ले सकते हैं ना इसके लिए. Even with the arsenic settled, but I didn't continue it with kingdom remedy. Anyone wants any clarification? सर आर्सेनिक देने के बाद भी थोड़े दिन के बाद वो काम करना बंद कर दी थी. हाँ, बंद कर देती थी. It would have exhausted, and if we keep putting arsenic, then patient may prove it. Okay. मस्त था सर, बहुत कोई रिव्यू. सर पास्ट हिस्ट्री जो बोल रहे थे आपने, पास्ट हिस्ट्री से लिए ना, तो उसमें स्टेज कैसे डिसाइड किया, एडोलेसेंट या कैसे डिसाइड किया? इसमें सर एक सिंपल मोटे मोटे 3 क्राइटेरिया है. If patient is talking about the past, then it is old age patient. If patient is talking about the present, it is a child age, and if patient is talking about the future, then it is young stage. As a young, what we suffer कि मेरे बच्चों को होना चाहिए, मेरे फैमिली को होना चाहिए, मुझे घर बनाना है. So we are thinking about the future. बच्चों को कैसे सर, आज आपने चाटा मारा, 2 घंटे के आपने चॉकलेट दियो, हंसते. They do not keep any enmity against you. वो भूल भी जाते. सो दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट टेंस. और ओल्ड एज में क्या रहता है, मैंने ऐसे किया था, मैं ऐसे था, मेरे जमाने में मैं दादा था, मेरे जमाने में आई वाज द ग्रेटेस्ट होम्योपैथ. अभी के बच्चे क्या है, पढ़ाई नहीं करते, अभी के बच्चों को कुछ काम करना नहीं आता. सो दैट इज द पास्ट टेंस. सो द पेशेंट, इफ so this was more of old age. Yeah, this is of a more of old age. There are actually 9 stages, but मोटे मोटे तरीके से हम लोग इधर तक तो पहुंच ही सकते. थैंक यू सर. मत बोलो अभी, आप क्या, परसों मिलूंगा तो मैं बदला लूंगा सर. चलेगा जी सर.
आइए, पूना में आइए, जिन्होंने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आ जाइए, विल हैव फन विथ लर्निंग। फन ज्यादा होगा, लर्निंग थोड़ी कम होगी। जी सर। तो वाइंड अप करते हैं सर। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर। मतलब बहुत सारे लोगों में से तो हम सभी उसमें शामिल हैं। एयरमी का नाम भी पहली बार सुन रहे हैं और पैथोलॉजी के हिसाब से अगर रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है, और स्पेशली इस तरह की पैथोलॉजी जब रहती है तो यही होम्योपैथी की वो वास्टनेस है, जो जितना हम सीखते जाते हैं उतना हमको ये अंदर से फीलिंग आते जाती है कि अभी तो हमको और पढ़ना है और पढ़ना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सीलेंट सेशन। बहुत मज़ा आया और बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हुए, और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि मेंबर्स जो हैं अभी थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको समझ में भी आता है। तो हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही है, हम सही दिशा डायरेक्शन में अपना एफर्ट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी और आपकी प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेंगी, और आपके केसेस निकलेंगे और आप उनको प्रेजेंट करेंगे हमारे ग्रुप में। इसी आशा के साथ शिंदे सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हम इस वीसी आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी अभी पूना में, तो आइए मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you for a wonderful session. Thank you. Bye bye. Good day. Thank you, sir. Good knowledge, sir. जी सर।